Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for watching the part 1 of my video Gardens by the Bay. आप सबने बहुत पसंद किया तो आज हम लेके आ रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द सेम वीडियो जहाँ पे मैं आपको गार्डन्स बाय द बे का डिटेल टूर मैंने पार्ट 1 में आपको ओवरव्यू दिया अपने जर्नी का कि कैसे सिंगापुर एमआरटी ऑपरेट करता है एंड हाउ कन्वीनियंट इट इज़ टू कम्यूट इन सिंगापुर यूजिंग एमआरटी विच इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सिंगापुर इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव और यहाँ मोस्टली लोग एमआरटी यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज कार्स आर सुपर एक्सपेंसिव एंड दे कैन नॉट अफोर्ड इट सो हमने भी सिंगापोरियंस की तरह एमआरटी को यूज़ करते हुए गार्डन्स बाय द बे जाने का फैसला किया। ऑर्चिड से एमआरटी लेकर हम पहुँचे डायरेक्ट गार्डन्स बाय द बे और वहाँ मैंने आपको दिखाया मरीना बे सैंड्स बिल्डिंग, फ्लावर डोम एंड रेन फॉरेस्ट। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन यू विजिट गार्डन्स बाय द बे आपको कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गार्डन बाय द वे पहुंचने के बाद मैं चला गया सीधे कैनोपी वॉकवे जहां से सुपर ट्री ग्रूव बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और साथ ही था मरीना बे सैंड्स। Gardens by the Bay is known for its greenery and serenity. I love Gardens by the Bay because यहाँ आके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। Gardens by the Bay पे जगह जगह आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बोर्ड्स मिलते हैं जहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं अपना रास्ता इजीली। इस व्लॉग में मैं आपको Gardens by the Bay का तो टूर दूंगा ही बट साथ साथ Gardens by the Bay के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। So the first interesting fact is the Gardens by the Bay sit on a reclaimed land जिसे सिंगापुर गवर्नमेंट ने reclaim किया to build this nature park and get this, it's no surprise that Gardens by the Bay is a UNESCO heritage site. The first must visit place in Gardens by the Bay is the Super Tree Grove. सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे सुपर ट्री ग्रूव। सुपर ट्रीज आर 18 trees like structure that dominate the garden's landscape with height that ranges between 25 meters and 50 meters. The super trees are home to some exotic ferns, veins, orchids, and also a lot of collection of bromeliads and other plants. They are fitted with environmental technologies that mimics the ecological function of trees. That harnesses solar energy which can be used for some of the functions of the super trees such as lighting and similar to trees photosynthesis. One amazing fact about the super tree grove is that each of the super grove tree is a garden. That's right. Each of the trees has more than 200 species of plants, variety of flowers and climbers. They were created from one-of-a-kind vertical garden covered in plant and colorful display of flowers. These trees also offer shade to visitors during the daylight and get illuminated at night, creating an hypnotizing light show. There is an elevated walkway, the OCBC Skyway, between two of the largest super trees for visitors to enjoy the panoramic aerial view of the gardens. Every night at 7:45 and 8:45 p.m., the Super Tree Grove come alive with a coordinated light and music show known as Garden Rhapsody. There is also an available attraction called Super Tree Observatory, which opened on 27 December 2019. The observatory is housed inside the tallest super tree, which is 50 meters tall. Since it's summer vacations in Singapore, so they have set up summer camp for children. They have set up beautiful mushroom-shaped houses, the honeycomb cobweb and other interesting activities under OCBC Skyway right in front of Marina Bay Sands. Isn't that amazing? Breathtaking view. In the center of the garden, you will find a floral clock which is right in front of the flower dome which adds more beauty and aesthetic to the garden. Now I have decided to explore the hidden gem of Gardens by the Bay which is located in the Heritage Groves. Gardens by the Bay में फ्लावर डोम, OCBC स्काईवे एंड रेन फॉरेस्ट मैंने तमाम चीज़ें विजिट की हुई हैं बट इस दफ़ा मैं विजिट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। इन द मिडल ऑफ हेरिटेज ग्रुप यू विल फाइंड इंडियन गार्डन विच इज़ तमन इंडिया और उसी के सामने आपको नज़र आता है मरीना बे सैंड्स की बिल्डिंग। ये बिल्डिंग और करीब से भी मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट थोड़ी देर बाद। Another interesting fact is that Flower Dome is the largest greenhouse in the world. It has also been listed in 2015 in the Guinness Book of World Record. This garden sits on 3 acres and imitates cool, dry Mediterranean climate. These garden displays exotic flowers and plants from 5 different continents. A walk through the Flower Dome is a real delight for every visitor. आप गार्डन्स बाय द बे के किसी भी कोने पे हो, सुपर ट्री ग्रूव आपको किसी भी एंगल से नज़र आ सकती है बिकॉज ऑफ इट्स हाइट एंड इट्स ब्यूटी। जस्ट चेक आउट दिस वॉकवेज सराउंडेड बाय वेराइटी ऑफ प्लांट्स। इट लुक्स अमेजिंग। द ग्रीनरी इज़ वेरी सूदिंग एंड रिलैक्सिंग एज वेल।
One of the amazing things about Gardens by the Bay is that its temperature are always constant. Singapore is a tropical country with an extremely hot and humid climate. It is therefore a relief to stroll through the gardens by the bay, enjoying the cool temperatures. Flower Dome imitates the Mediterranean climate with the temperature ranging between 23 and 25 degrees Celsius. Get this, सिंगापुर में हर वक्त फील लाइक 45 होता है और उस टेम्परेचर में मेडिटेरेनियन टेम्परेचर एंजॉय करना है तो फ्लावर डोम ज़रूर विजिट करें। अब से कुछ ही देर में मैं मेरी फेवरेट जगह पे जाने वाला हूँ, बट फर्स्ट क्विक इन्फॉर्मेशन दैट गार्डन्स बाय द बे में घूमने फिरने के अलावा खाने पीने के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। दैट्स राइट, यू विल फाइंड मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स एंड अदर लोकल ईटरीज एट द गार्डन्स बाय द बे। नाउ आई एम एट अ पॉइंट जो कि विजिटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है, विच इज़ द एसेंस ऑफ गार्डन्स बाय द बे। दैट्स राइट, एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से लेक गुजर रही है और दोनों तरफ इन्होंने आर्टिफिशियल फाउंटेन्स इंस्टॉल किए हुए हैं विच एड्स ब्यूटी टू द व्यू। ये व्यू बहुत ही अमेजिंग है बिकॉज सामने है मरीना बे सैंड्स और उसके इर्द गिर्द आपको नज़र आते हैं सिंगापुर के डाउनटाउन। लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गार्डन्स बाय द बे वाज एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट एंड इट कॉस्ट अराउंड 28 million Singaporean dollar to maintain the conservatory buildings, while the outdoor of the gardens cost around 25 million Singaporean dollars। ये व्यू सिंगापुर का सो फार बेस्ट व्यू है जहाँ पे आपको सिंगापुर फेरिस व्हील, मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे के अतराफ से नज़र आता है। इसी के साथ गार्डन्स बाय द बे का टूर अपने अख्ताम को पहुंचा। बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी की मैंने जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।